My name is Kevin. I'm from London, UK. I'm really happy to take my new voice. My problem started when I was 12 years old. This will definitely motivate people who are suffering from similar situations. I have high pitch voice problem. तो अभी तो सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वॉइस में काफ़ी फर्क आ रहा है. Okay. I actually had this surgery in the back and You said I'll take it as a challenge and I'll give you your voice back without any invasive procedures. After surgery, I have vocal cord paralysis. And now I can speak normal. I feel good. Hi, I'm Cyrus. Hi, my name is Cyrus. Hi, I'm Chong. Now my voice has recovered and improved. इसलिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम, मैं पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ. My name is Rehabilitation from Bangalore. And I'm very happy that I'm speaking like a normal people with a bass voice like male. So I'm having this voice problem. I spoke with a few of my friends and they found reasonable changes in my voices. I have been facing difficulty in speech. You are able to speak words properly and sentences properly. Just you try to say something. treatment the same day. After 2 hours, I got my voice. Hello friends, welcome to our YouTube channel SLP Sanjay Kumar, Voice Therapist. And today we are live with Tanmay, and Tanmay is having some voice problem. And today we are before treatment live, and please subscribe our YouTube channel so that you can watch Tanmay's post treatment live as well. So नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ SLP संजय कुमार, और मैंने अपनी पढ़ाई की है एम्स दिल्ली से, ग्रेजुएशन किया है स्पीच एंड हियरिंग साइंस में, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फील्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वॉइस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना. आज डेट है 23 जून 2021, और आज हमारे साथ हैं तन्मय. तन्मय को वॉइस की समस्या है, और आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हो रहे हैं, और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भविष्य में इनका पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव जरूर देखिए. और तन्मय की उम्र है 17 years. सो तन्मय, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एंड सिंस हाउ लॉन्ग यू आर फेसिंग? टेल योर प्रॉब्लम. सर, मुझे हाई पिच वॉइस की प्रॉब्लम है. कब से आप फेस कर रहे हैं हाई पिच वॉइस की प्रॉब्लम? थोड़ा डिटेल में बताइए, और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? सर, ये जब मैं 13-14 इयर्स का था, फिर तब से फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम. क्या होता है जब आप फोन पे बात करते हैं, क्या समस्या फेस करते हैं उस समय? फोन पे बात करते कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है, और जिन लोगों को जानता है मैं ठीक है. थोड़ा सा और आपका वॉइस सैंपल चाहिए, इसलिए अपना थोड़ा डिटेल में इंट्रोडक्शन दीजिए. कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, हॉबीज क्या है? थोड़ा सा कंटिन्यूअसली बोलिए, 2-4-5 लाइन और. मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ. मैं यहाँ अंबाला हरियाणा में रहता हूँ. मेरी एज 17 इयर्स है. ठीक है. तब हम लोग थोड़ा इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, यही इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में दे दीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो. यस. My name is 12th.
I live in Ambala, Haryana. My age is 17 years old. What challenges you are facing, and since how long you are facing the problem? I am facing this challenge from past 3 years. And I am having this high pitch voice problem, and some Okay. Okay, thank you, Tanmay. There is some network problem, so I'm sorry for that. So those who are watching this live, we are going to cover a few topics, and we'll discuss about what is puberphonia, because Tanmay was having puberphonia during the puberty and which has not been treated till now. So we'll discuss about the puberphonia and what is the sign and symptoms of puberphonia. That also we'll discuss, and we'll also discuss what are the causes of puberphonia, and we will also discuss diagnosis and treatments of puberphonia also, and we will also discuss this question: is all high pitch voice are puberphonia? That also we'll discuss, and at last we'll discuss how do you know your speech therapist is a certified professional. So these are the few points we are going to discuss one by one. Okay, so let's come to the what is puberphonia. Puberphonia क्या है? तो दोस्तों आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके हुए मैं बोलते चलूँगा कि इस बिंदु पे प्रकाश डालेंगे कि पुberphonia क्या है, पुberphonia के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पुberphonia का कारण क्या हो सकता है, और इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, क्या सारी पतली आवाज़ पुberphonia होती है, और आप कैसे पहचानेंगे कि आपका स्पीच थेरेपिस्ट एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, वो फेक नहीं है. तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे. So first, let's discuss what is puberphonia. So puberphonia is a condition during puberty or even after the puberty. A boy whose age is supposed 13, 14 years, and still he will be talking in a childish voice. So when on the phone people, those who are unknown, they will be calling, so they think they are talking to a girl. So puberphonia एक ऐसा condition है कि बच्चे की उम्र जो है वो किशोरावस्था पार कर गई है या किशोरावस्था में पहुंच गई है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह या पतली आवाज़ या लड़की की तरह आती है, और कई बार फ़ोन पे जब लोग बात करते हैं तो लोग मैडम कह देते हैं उनको, या ये सोचते हैं कि वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं, तो उससे उसके कॉन्फिडेंस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उसका. और फिर उसके ये तो एक साइन और सिम्टम्स हो गया, और इसके हम कारण पे भी विचार करेंगे. तो इसका कारण समझने के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द नॉर्मल स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉज, लेट्स फर्स्ट what is the normal speech production mechanism, then we'll come to the actual cause of the puberphonia. So for normal speech production, first thing is the thoughts that comes in the brain. Then we take air, that air goes to the lungs. When we breathe out, we put air pressure below the vocal cord. Here we have larynx. Inside the larynx, we have two sting-like structures known as vocal cords. So once you put air pressure below the vocal cords start moving like a string of a violin and guitar, and sounds generate. Then we modify that sound into different sound with the help of our articulators like lips, tongue, jaw, teeth, palate. For example, if you want to say pa, both the lips are coming closer together and touching each other. When you want to say ta, tongue is coming between the teeth. When you want to say ka, back of the tongue is getting elevated and touching the saw palate. So each and every sound has own place, own manner of articulation. So when you say a one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cords move, sound generate, we modify that sound into different sound. In one sentence, there are so many words. In each word, there are so many sounds. Each sound has own place, own manner of articulation. So it is little complex process. In this process, there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. If coordination among these muscles goes, there will be another problem called stammering, which happens sometime among some people. And if there is a place of articulation, manner of articulation is wrong, there will be pronunciation problem. So let's come to the now the puberphonia. Why the puberphonia? So as I told, here we have larynx. Inside the larynx, we have two string-like structures known as vocal cords. So you can consider the vocal cords like a string of a violin or guitar. So before puberty, the vocal cords are thin. Doesn't matter it's a boy or girl. But during puberty,
due to a hormone called testosterone, mass of the vocal cord, length of the vocal cord increases and the pitch reduces. So there is no difference between boy and girl's voice before puberty, but because of testosterone effect, in case of boys during puberty or after puberty, the vocal cords become thick and the pitch reduces. It becomes more masculine. You have also seen that, you must have seen in guitar, there will be thin string. Thin string produces high pitch voice, shrill voice. Thick string produces the low pitch voice, masculine voice. So why most of the kids, most of the boys, they will automatically switch on to the new voice even after puberty. But there are people like Tanmay who continued his high pitch voice even the puberty was over. The reason may be sometime because the child has spoken from childhood to puberty in a high pitch voice. During puberty, vocal cord mass got changed, length got changed. It's ready to produce the low pitch voice, but because of so many years habit, they will not accept the new voice. They will not. They will try to maintain the childish voice because of long years habit. So if this is the vocal cords, to maintain the high pitch voice, instead of vibrating the whole mass and the whole length of the vocal cord, they will just vibrating thin edges of the vocal cord. So because they are vibrating only thin edges, so vocal cord is actually a thick string, but they are using like a thin string of a guitar. And if the guitar string will be the thin, the pitch will be higher. So what I will do as a voice therapist, I will try to stimulate whole mass and the whole length of the vocal cord. And once we'll stimulate it with a certain vocal exercise, we call it voice therapy. So the vocal cord, which was behaving earlier like a thin string of a guitar, and it will start behaving like a thick string of a guitar, and the pitch will reduce. So there was a topic of treatment also, how we do the treatment. So treatment is voice therapy, and in fact, I'm going to do online voice therapy with Tanmay. And if the voice therapy doesn't work, then in very, very rare cases, that situation may happen sometime. So the method is thyroplasty, and that will be done by the ENT surgeon. But after thyroplasty also, they will be suggesting the voice therapy to make the voice more stable, and otherwise it will look like very hoarse or even not be melodious. So if voice therapy helps, the voice therapy is itself complete procedure. But if you are going for the surgery, so even after surgery, you have to take the voice therapy. So that's why the people first prefer the voice therapy. And because this puberphonia is not a very, very common problem. So it may be all the speech language pathologists may not be equally efficient to treat this kind of problem, because this is not a very common problem. This is very, very rare problem. So if one therapist is not able to help, it doesn't mean that your body is not responding on the voice therapy and immediately you should plan to go for the surgery. You should try to find out the expert who are really expert in treating such kind of communication disorder. Even those people are not able to help, then you can think about the surgery and other procedure. But first and the preferred method is the voice therapy. So hope I discuss about the cause, diagnosis, treatment. And now there was one more question what I thought I'll be discussing. Is all high pitch voice is puberphonia? The answer is no, because there is a condition we call it the sulcus vocalis, where the nature will be giving a thin vocal cord. Mass and the length of the vocal cord will not be sufficient. So that case also the voice look like a high pitch voice. So it doesn't mean that it's a puberphonia. It's a dysphonia due to the sulcus vocalis. Even like pitch frequency depend upon the vibrating strings, mass, length, and the tension. If you remember class 11, 12 physics, n is equal to 1 by 2L under root T by M. Here n is the frequency, L is the length of the vibrating string, M is the mass per unit length, and T is the tension. So if there is a more tension, laryngeal tension, that time also the pitch will be higher. And even I have seen in the case of phonatory gap also pitch will be higher. So it doesn't mean that all the cases are exactly the same. Suppose a patient whose age is 50 years and he's coming to my clinic and he is telling, sometime on the phone, people will say, sir, I have puberphonia. When I ask, what is your age? My age is 42 years. So puberphonia, puber means what? Puberty. Phonia means something related to the voice. A voice problem which is related to the puberty, which occurs during puberty. That time we can tell technically, okay, it's a puberphonia.
But 42 years age is not a pubertal age. So that time, technically, we should not tell puberphonia. So that is also technical things. And of course, high pitch voice, feminine voice can be due to different reason. Even sometimes hormonal issue can also happen, but that is a very, very rare case. Okay, so as I did the acoustic analysis, perceptual evaluation, and based on the other information, I was very confident with about the Tanmay, who is with us during this live. He was having puberphonia during the puberty, and that was not treated. And so now his age is 17. So I have made heading of this live puberphonia. Of course, I can say that 17, it's a teen age. Like, so of course, let's use the puberphonia technical term, but best will be when exactly the pubertal is if I am using. Okay. So just for awareness, I have used because it's a 17 teenage. Okay, so and now another question was, how do you know your speech therapist is a certified professional? Nowadays, because of the social media is very common or very popular among people, and there are some people, those who are unemployed and failed in their own profession, so they also try to give the speech therapy. Healthcare quacks are common in our society. So sometimes they may damage the vocal cords and voice. But in the social media, they will write with their name also, a speech therapist, SLP, voice therapist. So sometimes for the innocent people, it's become difficult to know who is a real speech therapist, who is a fake or healthcare quacks. To understand that, whenever you are going to take any professional help, just try to find out the person from whom you are going to take treatment, what is his name, in which hospital, which clinic he works, that clinic, hospital exists in this world or not. You can do the research on the Google, and even try to find out from which college he has studied, that college also exists in this world or not, and in which year he did graduation, post graduation in the speech language pathology, in the speech and hearing science, and if he is registered in the Rehabilitation Council of India or not, if he has a registered registration number is there or not on the social media page or on the website. So if you will try to find out all those information, those will be the real speech therapists. They will be giving this information. मेरे लिए जैसे फक्र की बात है कि अगर मैंने पढ़ाई किया है एम्स दिल्ली से, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है स्पीच एंड हियरिंग साइंस पे, तो मैं बताता हूँ खुलेआम. लेकिन अगर झोला छाप होंगे तो वो बताएंगे नहीं कि मैंने पढ़ाई कहाँ से किया हूँ. जस्ट बोलेंगे मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, और कहीं से अगर और ज़्यादा स्मार्ट है तो कहीं नेता के साथ फोटो वोटो भी खिंचा के कहीं डाल देंगे. तो ये सब भी करते हैं. उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप पता कीजिए कि उसने पढ़ाई कहाँ से किया है, कॉलेज कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, कौन से ईयर में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है. तो इन सारी चीज़ों की पूरे खंगाल करके ही आपको थेरेपी लेनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए कि अगर आप एक फेक स्पीच थेरेपी से थेरेपी लेते हैं और उसको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, उनके लिए तो सारे हाई पिच वॉइस एक ही हैं. तो वैसे केसेस में क्या होगा कि कभी कभी वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा, वॉइस इस सिचुएशन पे हो जाएगी कि कई बार ठीक करना भी हमारे जैसे प्रोफेशनल के द्वारा मुश्किल हो जाएगा. तो आपकी वॉइस और वोकल कॉर्ड्स काफ़ी कीमती है, तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए और एक अच्छे प्रोफेशनल से ही इस तरह की सर्विसेज लीजिए, स्पीच थेरेपी और वॉइस थेरेपी. तो जो लोग नया जुड़े हैं, मैं उनको बता देना चाहूँगा कि आज हमारे साथ तन्मय हैं, और तन्मय को प्यूरफोनिया थी प्यूबर्टी के दौरान, जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ. अभी उम्र 17 साल है, 17 ईयर्स एज है, और आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हो रहे हैं. आज डेट है 23 जून 2021, और भविष्य में हम लोग ट्रीटमेंट के बाद भी लाइव होंगे. तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनका पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव भी देखिए ज़रूर. और तन्मय की प्यूरफोनिया के साथ साथ थोड़ी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी है, लेकिन इनका भी टारगेट है इनकी फैमिली का कि प्यूरफोनिया पे ही काम किया जाए. तो फिलहाल हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट होंगे. ठीक है, और मैं चाहूँगा कि तन्मय फिर से आप एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कब से फेस कर रहे हैं. अपना माइक ऑन कर लीजिए, लोगों को अपनी आवाज़ सुनाइए. मेरा नाम तन्मय है, मुझे हाई पिच वॉइस की प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम मुझे 3 से 4 साल से है. ठीक है, you can tell the same thing. You can speak in English also. What exactly problem you had, since how long you have? My name is Tanmay. I'm facing this issue since
3 years. Yeah. So I'll be now seeing any questions are there of the YouTube channel viewers. So I want to say everyone thank you those who have joined here, and Sorry, sir. yeah. So I'll be now discussing the question answer if somebody is watching this live. Okay. So just 1 minute. So thank you everyone for joining us and watching us. And now I'll be able to see all the questions. And, आवाज नहीं आ रही सर आपकी. oh, sorry. So thank you everyone for joining us, and now I'll be able to see all the questions, and I will give answer if any questions comes. So थैंक यू दोस्तों, हमें ज्वाइन करने के लिए सभी लोगों का स्वागत है. मानिक लिखते हैं गुड इवनिंग सर. हाय मानिक, गुड इवनिंग. एंड नीलेश सिंह लिखते हैं हाय सर. हाय नीलेश. और सोमशेखर लिखते हैं हेलो सर. हेलो सोमशेखर. और हेल्थ पावर लिखते हैं क्लिनिक कब ओपन होगा. तो क्लिनिक ओपन हो चुका है, आप कॉल कर सकते हैं. हमारा जो लैंडलाइन नंबर है 080 से वो शुरू होता है. वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो वो मेंशन किया हुआ है. और मानो सहगल लिखते हैं सर मेरी आवाज़ बहुत हाई पिच है, क्या करूँ प्लीज़ बता दो. ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. एक बार सबका क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. सर आपका क्लिनिक आ सकते हैं. तो हाँ जी, हमारे क्लिनिक में पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. तो आप हमें बेस्ट वे है हमसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए ईमेल के माध्यम से लीजिए. और कई बार क्या होता है क्लिनिक एक लिमिटेड पीरियड के लिए खुला रहता है, तो फिर कई बार हम कॉल मिस कर जाते हैं. तो बेस्ट है कि आप मेल कीजिए. हमारा ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ हमारे इस लाइव वीडियो के. अब बात करके क्वेश्चन पे. सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, शायद ठीक हो जाएगा. हेलो हेलो. हाँ सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था. तो हाँ, एक क्वेश्चन था क्लिनिक कब ओपन होगा. तो मैंने बता दिया क्लिनिक ओपन हो चुका है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें. और मानव सहगल लिखते सर मेरी आवाज़ भी बहुत हाई पिच है, क्या करूँ प्लीज़ बताओ. तो मानव सहगल जी आप हमें कॉल कीजिए और हम पहले परसेप्चुअल इवोल्यूशन के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे. और अगर समझ में आ जाएगी तो ठीक है, कई बार नहीं समझ में आती है तो हम लोग स्ट्रोबोस्कोपी जो सबसे कॉमन टेस्ट सजेस्ट करते हैं, या कई बार लैरिंगोस्कोपी भी सजेस्ट कर सकते हैं, या कुछ दूसरे टेस्ट भी रिकमेंड करेंगे. उन सारे टेस्ट के रिपोर्ट हमारा परसेप्चुअल इवोल्यूशन, एकॉस्टिक एनालिसिस, तीनों के कंबाइंड इन्फॉर्मेशन के आधार पे कई बार कमेंट कर पाएंगे. और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ सुन के ही हम कमेंट कर पाते हैं. तो पहला स्टेप ये है कि आप हमें कॉल कीजिए. और बहुत ही कंप्लेन आता है मुझे बहुत ज़्यादा आजकल कि मैं कॉल उठाते नहीं हम लोग. तो क्लिनिक लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन होता है. तो बेस्ट वे है आप लोगों का कि आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाइए. वेबसाइट पे हम रिच मी क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखेगा हमारा. तो ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट कीजिए और अपना फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए उस मेल में, तो हम लोग खुद कांटेक्ट करेंगे. और ऑफ कोर्स 24 आवर्स हम लोग फ़ोन नहीं उठा पाते हैं. और क्लिनिक भी आजकल लिमिटेड पीरियड के लिए खुला हुआ है. और हेल्थ पावर लिखते हैं प्यूरफोनिया का क्या ट्रीटमेंट है. अभी तो इसी पे हम लोग चर्चा किए. लेकिन आपको प्यूरफोनिया है कैसे ये पता चलेगा. एक प्रोफेशनल के इवोल्यूशन के द्वारा. तो कई बार क्या होता है पेशेंट बोलते हैं सर मुझे हॉर्स वॉइस है, कितना टाइम और कितना खर्चा लगेगा. हॉर्स वॉइस होने के भाई साहब कारण हो सकते हैं वोकल नॉड्यूल, वोकल पॉलिप, वोकल कॉर्ड में सिस्ट. प्यूरफोनिया में भी हॉर्स वॉइस होता है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में भी होता है, स्पास्मोडिक डिस्फोनिया में भी होता है. तो कई सारे कारण हो सकते हैं. तो सिर्फ पेशेंट ने ही खुद से डायग्नोज कर दिया और हम ट्रीटमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है. पेशेंट भी आजकल बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए हैं. गूगल जो है डॉक्टर बना दिया है सबको. तो अब क्या करेंगे, पेशेंट मुझसे बोलेंगे सर, अभी रिसेंटली एक मेरे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आया था कि सर मुझे र का स्टैमरिंग है, मतलब ये मुझे प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है. और साउंड लिखा था र और ल, अब ब्रैकेट में लिखा था स्टैमरिंग. तो जो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है उसको मिस आर्टिकुलेशन करते हैं. तो पेशेंट खुद को ही डॉक्टर समझ लेते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट समझ लेते हैं. जो मिस आर्टिकुलेशन है उसको स्टैमरिंग कहते हैं, स्टैमरिंग को मिस आर्टिकुलेशन कहते हैं. और अभी कमेंट आ रहा है एक भाई साहब का कि हमें प्यूरफोनिया है.
तो पियरफोनिया वो खुद से ही डिसाइड कर लिए कि हैं, जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पतली आवाज़ होने का मतलब पियरफोनिया नहीं होता है। पतली आवाज़ में सल्कस वोकलिस में भी हो सकती है, फोनेटिक गैप में भी हो सकती है, मसल टेंशन डिस्फोनिया में भी हो सकती है, तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। इनफैक्ट पियरफोनिया में भी हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज में भी हो सकते हैं। तो पहले प्रॉब्लम को समझने के बाद ही हम कमेंट कर पाते हैं। तो हमें डिसाइड करने दीजिए कि आपको क्या है। तो आपको क्या है ये हम कैसे पता कर पाएंगे? आप हमें कॉल कीजिए। और जब कॉल करेंगे तो हम परसेप्चुअल इवोल्यूशन करेंगे। एक लिखे हेल्थ पावर, लिखे हैं, नाम बड़ा अच्छा है, हेल्थ पावर IQ गेमिंग, और खुद से डायग्नोस कर रहे हैं। तो हमें कॉल करेंगे तो हम लोग डायग्नोस करेंगे क्या प्रॉब्लम है। और हो सकता है सिर्फ फोन पे सुन के भी डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, कई बार स्ट्रोबोस्कोपी लैरिंगोस्कोपी के लिए सजेस्ट करना पड़ेगा, तब हम लोग डायग्नोसिस के सिचुएशन में पहुंचते हैं। और आप लोग खुद से डायग्नोस जो करेंगे तो उसके आधार पे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं क्या सजेस्ट करूं। लेकिन इस लाइव में हमने जो शुरू से, अगर जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा कि पियरफोनिया के सिम्टम्स क्या हैं, इन चीज़ों पे चर्चा की, साइन सिम्टम्स पे भी चर्चा की, कॉज पे भी चर्चा की, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे भी हमने चर्चा की, और क्या सारे हाई पिच वॉइस पियरफोनिया हैं, इन बातों पे भी चर्चा की, और झोला छाप स्पीच थेरेपिस्ट और असली स्पीच थेरेपी में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इन सारी बातों पे भी चर्चा की। तो आप लोग शुरू से इस लाइव को देखिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और आपके लिए यूजफुल होंगे। और ठीक है, तो फिर से एक बार मैं चाहूँगा तन्मय कि आप अपनी आवाज़ को फिर से सुना दीजिए। व्हाट प्रॉब्लम एग्जैक्टली यू आर फेसिंग, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर फेसिंग, एंड व्हाट चैलेंजेस आर देयर बिकॉज ऑफ दिस वॉइस प्रॉब्लम। तन्मय माइक ऑन कीजिए। प्रॉब्लम है हाई पिच वॉइस की वजह से मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करने में थोड़ी शर्म आती है, और ऑनलाइन क्लास में भी माइक ऑन करने में थोड़ी देर। अभी आप कहाँ पे रहते हैं? मैं अभी अंबाला, हरियाणा। और मेरा क्लिनिक है बैंगलोर में, और मैं बैंगलोर में हूँ, आप अंबाला में हैं, और उसके बावजूद भी हम लोग ऑनलाइन वॉइस थेरेपी के माध्यम से इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो जो लोग भी नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहूँगा कि तन्मय को प्यूबरफोनिया की प्रॉब्लम थी प्यूबर्टी के दौरान, जिसका इलाज नहीं हुआ, तो आज भी कंटिन्यू हो गई है, और इनकी उम्र 17 ईयर्स है। और हम लोग इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ऑनलाइन वॉइस थेरेपी के माध्यम से करेंगे। मैं बैंगलोर में हूँ और ये अंबाला में है। तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भविष्य में इनका पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव जरूर देखिए। So those who are watching this live, please subscribe us and our YouTube channel. You can subscribe, and don't forget to watch the post-treatment live that we are going to do in the future. And today date is 23rd June 2021, and today we are before treatment live. So thank you everyone for joining and watching. I will just check if any question we have, we will discuss. Otherwise, we will move forward. And okay, so thank you everyone for joining us, and keep watching. Thanks for your love and support. And there is a news for everyone. Because of your love and support, our YouTube channel subscriber has increased now recently, more than 10,000. So keep watching, and I'll be also trying to make more and more live and try to increase more awareness about the communication disorder available treatment. So thank you everyone for joining us and watching us. Thank you, Tanmay, for being live and helping me to create awareness about the voice problem like Puberphonia. Thank you, Tanmay, to you also. तन्मय सुन पा रहे हैं मुझे? माइक ऑन कीजिए। सुन पा रहे हैं तन्मय? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, शायद नेटवर्क इशू हो गया। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस लाइव के माध्यम से इस तरह की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारी मदद की। इस लाइव को अब हम लोग स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच।